Hello students, today we will discuss a very important motion called wave motion. First of all, what are waves? Waves are defined as it is the distribution of energy, transfer of energy or the transfer of disturbance. Suppose हम किसी लेक में एक पेबल स्टोन थ्रो करते हैं. You all know the particles on which the stone is thrown, it starts executing SHM. As we have already studied SHM, there are two types of waves formed in water. One is transverse wave and another is longitudinal wave. The sound occurs due to longitudinal waves and the ripples occur due to transverse waves. So, wave motion is a type of disturbance. It is the transfer of energy from one point to another. हम किसी पानी में पत्थर मार रहे हैं तो जिस पार्टिकल के ऊपर पत्थर पड़ा वो SHM कर रहा है और उसने एनर्जी अपने बगल वाले पार्टिकल को ट्रांसफर की. ब्रॉडली वेव्स को हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज इलास्टिक वेव्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. इलास्टिक इज मैकेनिकल वेव्स. सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हिंदी में हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एंड द थर्ड कैटेगरी इज मैटर वेव्स. On the basis of medium, all the waves are broadly classified into three categories. Elastic waves need medium for their propagation. इनको medium माध्यम की आवश्यकता होती है. For example, longitudinal wave. Longitudinal wave को हम लोग हिंदी में अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं. और electromagnetic waves, they are formed by the mutual interchange of perpendicular electric and magnetic field, oscillating electric and magnetic field. Suppose we have an accelerated charge during spark. जब हम किसी स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, spark is produced. It has got electric field as well as magnetic field. Electric and magnetic field also oscillates in the form of waves. और इन दोनों के perpendicular a wave travels that is known as electromagnetic wave. Electromagnetic wave का सबसे best example है light wave, gamma rays, X rays, and you can say visible light, ultraviolet light, they all are electromagnetic waves. Then the third category is matter waves. Matter waves are also known as de Broglie waves. De Broglie is the name of scientist. According to matter waves, according to de Broglie, every particle and radiation has dual character, that is particle character as well as wave character. And the wavelength of the wave character is equal to lambda is equal to h upon p. P is linear momentum, h is the Planck's constant, and wavelength is inversely proportional to mass, or mass you can say. Less the mass, more is the wavelength. This de Broglie's relation is applicable for microscopic particles, electrons, protons, because they have got less mass, so their de Broglie wavelength is more and we can easily see their wavelength. So broadly we have classified waves into three categories. Elastic waves, also known as mechanical waves, they require medium. Electromagnetic waves, as the name suggests, they are formed by the perpendicular electric and magnetic fields, oscillating electric and magnetic field, and a wave travels perpendicular to both electric and magnetic field, that is called electromagnetic wave. They are transverse. Electromagnetic waves are transverse. In Hindi they are called anuprastha tarange. Then matter waves are known as de Broglie waves because it was given by de Broglie. According to de Broglie, any particle or radiation that shows dual character, dual means double, particle as well as wave, the wavelength of the wave character is equal to h upon p. P is the linear momentum, mass into velocity. So two things are required for the formation of waves. One is elasticity. As we have already studied in the chapter elasticity, there are three types of modulus of elasticity: Young's modulus, Bulk's modulus and modulus of rigidity. And the second property required for the formation of waves, तरंगों के बनने के लिए जो दूसरी property चाहिए, that is inertia. Inertia in Hindi is called जड़त्व. So a medium should have these two properties, elasticity as well as inertia. Then only waves are formed, and the two major category of waves are transverse waves and longitudinal waves, right? In transverse waves, the particles oscillate in a direction perpendicular to the propagation of waves. See, these particles are oscillating perpendicularly to the direction of propagation of wave.
तरंग आगे जा रही है और जो पार्टिकल्स हैं वो उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं, SHM कर रहे हैं. In longitudinal waves, the particle oscillates in the same direction as that of the propagation of wave. जिस दिशा में वेव जाएगी उसी दिशा में पार्टिकल्स भी ऑसिलेट कर रहे हैं. In longitudinal wave, there is a formation of compression and rarefaction. Compression means the coming to closer of the particles. The particles come closer, that is compression. And rarefaction is the moving away of the particles, that is rarefaction. So there is a formation of compressions and rarefactions, and the particles are oscillating parallel to the propagation of wave. See, transverse waves, example of transverse wave, light waves, gamma waves, you can say ultraviolet, visible light, X-rays, they all are transverse wave. The best example of longitudinal wave is sound wave. See, whenever I am speaking, मैं जैसे बोल रहा हूँ तो पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं, कंप्रेशन दूर जा रहे हैं, रेरीफैक्शन फिर पास आ रहे हैं, तो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन और वेव का प्रोपोगेशन सेम डायरेक्शन में है. ट्रांसवर्स वेव का सबसे बेस्ट एग्जांपल लाइट वेव, एंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव वी विल डिराइव इट ऑल्सो. द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग, अगर हम किसी रस्सी को या किसी डोरी को झटका देते हैं तो उसमें ट्रांसवर्स वेव फॉर्म होंगी जिसकी वेलोसिटी स्ट्रिंग के टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है. दिस T स्टैंड्स फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड दिस M स्टैंड्स फॉर मास पर यूनिट लेंथ. दिस मास पर यूनिट लेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर डेंसिटी. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग. एंड द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन जनरल, द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन जनरल depends on modulus of elasticity and density. This E stands for modulus of elasticity. Modulus of elasticity हम लोगों ने पढ़ा है. It is of three types. This E may be Young's modulus, it may be Bulk's modulus, or it may be modulus of rigidity. And this rho is the density of medium. इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम, माध्यम की आवश्यकता है. जैसे हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि यूनिवर्स में या आउटर स्पेस में कोई एक्सप्लोजन होता है तो हम उसको नहीं सुन सकते क्योंकि आउटर स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. बट ट्रांसवर्स वेव को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, बट ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में फॉर्म हो सकता है. साउंड में हम लोग पढ़ेंगे कि साउंड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो इन जर्नल वेव तरंगें हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है. अभी लेटेस्ट डिस्कवरी में ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल वेव्स को भी ग्रेविटेशनल वेव्स से कोरिलेट किया है. एंड द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून, दैट ऑल्सो क्रिएट्स वेव्स इन सी. यू कैन सी स्पेस in oceans there is a formation of tidal waves. So waves have got importance in our day-to-day life. Broadly we have classified the categories of waves, then the types of transverse and longitudinal waves, and these two important conditions for the formation of waves, that is elasticity, हिंदी में इसको प्रत्यास्थता बोलते हैं, and inertia is that is called जड़त्व. So that is it.